Assalamu alaikum dear students, I hope you will be doing well. So today we are going to start our lesson from where we had stopped. We are going to start our lesson with paragraph number 10, remaining half. And the first heading was community development. Community development, community ki tarakki. Many women entrepreneurs start businesses that address local issues such as education, healthcare or access to resources. कई कारोबारी ख़वातीन ऐसे कारोबार शुरू करती हैं जो मकामी मसाइल जैसे तालीम, सेहत की देखभाल या वसाइल तक रसाई को हासिल करते हैं. एक्सेस रसाई. This creates a positive social impact, improving the quality of life for people in their communities. इससे माशरती असरात मुरतब होते हैं. सोशल इम्पैक्ट, माशरती असरात, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अपनी कम्युनिटी के लोगों को ज़िंदगी के मयार में बेहतरी आती है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ज़िंदगी के मयार में बेहतरी लाना. नेक्स्ट हेडिंग इज़ promoting gender equality. Gender equality सिन्फ की बराबरी को फ़रोग़ देना. When women participate in the economy as entrepreneurs, जब ख़वातीन मईशत में कारोबारी अफराद के तौर पर हिस्सा लेती हैं या कारोबारी लोगों की तरह हिस्सा लेती हैं, they challenge gender stereotypes and promote equality. तो वो सिनफ़ी रवायात, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, सिनफ़ी रवायात को चैलेंज करती हैं या ललकारती हैं, एंड प्रमोट इक्वालिटी और बराबरी को फ़रोग़ देती हैं. देयर सक्सेस इनकरेजेस सोसाइटी टू व्यू वेमेन एज केपेबल लीडर्स एंड डिसीजन मेकर. इनकी कामयाबी मुआशरे को ख़वातीन को काबिल रहनुमा और फ़ैसला करने वालों के तौर पर देखने की तरगीब देती है. means capable to view. Innovation and problem solving, जिद्दत और मसाइल का हल. Innovation, जिद्दत. Women often bring unique perspectives and innovative solutions to the problems they address through their business. ख़वातीन अक्सर अपने कारोबारों के ज़रिए, बिजनेसेस हैं तो कारोबारों यूज़ करेंगे, के ज़रिए जिन मसाइल को हल करती हैं, इनके लिए मुनफरिद नज़रियात और जदीद हल पेश करती हैं. Their ventures can lead to new ways of thinking, improving products, services and even social conditions. इनकी कारोबारी सरगर्मियाँ नए ख़यालात का आगाज़ कर सकती हैं, कैन लीड कर सकती हैं, जो मसनूआत, खिदमात और यहाँ तक के एंड इवन मीन्स यहाँ तक के समाजी हालात को बेहतर बनाने का बायस बन सकती है. सो यहाँ पर अगेन वेंचर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करें हैं सरगर्मियाँ. आप इसके लिए मुहिम्मात का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एट वी हैड डन बिफोर. पैराग्राफ नंबर 11. Despite these challenges, women entrepreneurs in Pakistan are finding ways to overcome barriers. इन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में कारोबारी ख़वातीन अफराद रुकावटों को दूर करने के तरीके तलाश कर रही हैं. Many of them have built strong support networks connecting with their other family entrepreneurs to share advice. इनमें से बहुत सौ ने मज़बूत मुआवन नेटवर्क बनाए हैं जहां वो दीगर ख़वातीन कारोबारी अफराद से मशवरे, हौसला अफजाई और मौक़े बांटती हैं. इंकरेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स हौसला अफजाई और मौक़े बांटती हैं. The growth of e-commerce and online platforms has also given women more flexibility. ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरक्की ने भी ख़वातीन को ज़्यादा लचक दी है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लचक दी है. एंड अलाउइंग देम टू रन बिजनेसेस फ्रॉम देयर होम्स, और इनको अपने घरों से कारोबार चलाने की सहूलत
میسر کی ہے یا مہیا کی ہے یا اجازت دی ہے، اینڈ بائی پاس سم آف دا موبلٹی ایشو دے فیس، اور تاکہ وہ اپنا سامنا کرنے والے کچھ نقل و حرکت کے مسائل سے بچ سکتی ہیں۔ موبلٹی ایشوز، نقل و حرکت کے مسائل، موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو کچھ عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے آن لائن بزنسز بھی ایک بیٹر آپشن ہو سکتی ہے۔ So that is it for today for English A. Now we are moving towards English B, and today's diary of English B is letter number 6 and letter number 7. So let's get started with the reading. So dear students, we'll talk about the format. That is the most important thing according to the board. So you can see how I have written the format of the letter. So this is the most important thing that carries a lot of marks. So let's get started with the title. Write a letter to your brother about the importance of the study and of science subjects. So you have to start the letter by writing examination hall, then there will be a comma, then there is city A dot B dot C dot. Now that dot is necessary. Without that dot you will be losing 1 mark. And this is the format of the date, and this has to be written in this way, and because this is the board approved format, so you cannot change it. So where are the commas, how much to capitalize, and what is to write, you can write it like that. And date can be any date. You may write the today's date, that can be 2026. And what is the today's date? This is just a format. You can change the date according to the day. Then you have to leave a line. پھر آپ کو ایک لائن چھوڑنی ہے، یہ must چھوڑنی ہے. It shows that you are going towards the second portion of the salutation. And then, dear brother, you are not supposed to write the name. آپ کی بک میں name لکھا ہوا ہے، آپ نے کبھی بھی لیٹر میں name نہیں لکھنا ہوتا. کوئی بھی ہمیشہ ریلیشن کو ایڈریس کرتے ہیں. If you are writing a letter to your friend, so you will write dear friend. If you are writing a letter to your brother, you will write it your brother, etc. etc. I hope this letter finds you in the best of health and spirits. You have now been promoted to class 9. It is time for you to decide whether you would like to study humanities or science subjects. The world has progressed very much in the field of science. If we want to keep pace with it, we must keep our knowledge of science up to date. Now, just focus how we have written up to date. Everyone should know the basics of science, so I would advise you to study science at least up to matriculation level. Matriculation level is the 10th class. It will broaden the horizon of choice that you can make of higher studies. Also, there are many fields in science that might catch your interest. Please think carefully before making a final decision. Convey my salam to your friends. And now you are supposed to leave a line again. So dear students, when you write a new paragraph, the space should be equal from this side and from this side. یہ دونوں sides کی جو space ہے یہ equal ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو letter ہے وہ well aligned لگے. Then it is important کہ آپ یہاں پر کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ پراپر اسپیس چھوڑیں تاکہ یہ شو کرے کہ آپ ایک نیا پیراگراف سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اینڈ دس ورڈ یورز افیکشنیٹلی، یہ آپ ایسے ہی نہیں لکھ لیتے ہر لیٹر کے لیے. اٹ از ریٹن اکارڈنگ ٹو دا ریلیشن. اگر آپ اپنے بردر کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو اٹ وڈ بی یورز افیکشنیٹلی. اگر آپ اپنے فرینڈ کو لکھ رہے ہیں تو اٹ ول بی یورز سنسیئرلی. سو دیر از دا ڈفرنس. سو یو آر سپوز ٹو write these words according to the relation. And similarly, yours affectionately followed by a comma, x dot y dot z, and there will be no dot at the end. So یہ پورا فارمیٹ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. The second letter is letter number 7. Write a letter to your friend congratulating her on her birthday. So the format will be same. Then there is the body, and then there is the ending closure, and then there is the address. بالکل اسی طریقے سے ہم لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایکس وائی زی سے
اینڈ کر دیں گے. ناؤ دیر از نو اسپیس ان اٹ بیکاز آئی ہیو این ادر پیج, سو دیٹ از وائی آپ کو اسپیس لگ رہی ہے. دیر از نو اسپیس آفٹر یورز سنسیئرلی, اٹ از ریٹن رائٹ آفٹر دیٹ. سو دیٹ واز اٹ ٹوڈیز لیکچر. Hope you would have understood everything. If you find any problem, any kind of issue in your lecture, you may message me directly. And please try to learn your diary on the daily basis so we can cope up and mitigate the situation that is going on these days. Pray for the regular classes and pray for the good situation of your country and the world. Take care of yourselves and Allah Hafiz.